Assalamu alaikum everyone, it's me Miss Sania and today we are back with another lesson. As you all know कि हमने previously बहुत सारे ऐसे lectures थे जिसको deliver किया था इस platform से चकलू स्टूडियो से जिनमें you can say like phrasal verbs थे या फिर on and off काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम करते आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो है वो लाइव टॉक सीरीज़ की in which we have invited multiple people. So, anyways, today we are just starting with a new lesson that is direct and indirect speech. We have completed phrasal verbs and multiple things in the previous lectures. So, आज जो है that is about direct and indirect speech. Now, direct and indirect speech अगर मैं grammar की बात करूँ तो grammar में direct and indirect speech बहुत ही एक prominent and बहुत ही एक important role play करता है. उसका मेजर रीज़न ये है कि अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपकी लाइफ में ना हो देन आई डोंट थिंक सो कि आप लाइफ में यू कैन मूव फॉरवर्ड और यू कैन डू एनीथिंग एल्स, राइट. रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये चीज़ है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, एक तो पहली चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपकी जो है वो कम्युनिकेशन ना की जाए, सही है. तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई कि आपने जो है वो कम्युनिकेशन को करना है, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब आपने कम्युनिकेट करना है तो ऑटोमेटिकली आपने सामने वाले इंसान को अपनी बात से रजामंद करना है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट की, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि काइंडली ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग बाय योरसेल्फ दैट व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट हैज़ बीन आस्क्ड, राइट. तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट का बेसिकली मतलब होता है कि आप डायरेक्टली किसी इंसान से मुखातिब हैं, और जब आप मुखातिब हैं तो उसको जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये चीज़ आपकी जो है वो बेसिकली कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, राइट. लेकिन जब मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट स्पीच की, देन इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि आप उस इंसान से डायरेक्टली मुखातिब नहीं हैं. आप जो है वो फॉर एग्जांपल आपने किसी और इंसान से बात की है एंड देन यू आर रिटर्निंग बैक टू दैट पर्सन और उसके पास फिर आप वापस आकर जो है वो अपनी बात को डिलीवर कर रहे हैं, राइट. तो ये चीज़ जो होती है ये होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. तो दोनों में जो बेसिकली आपका डिफरेंस आता है तो वो आपका इन दो स्पीचेस का डिफरेंस आता है, सही है. अच्छा, नाउ लेट मी टॉक अबाउट, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड और इसको जो है वो मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें इस चीज़ से जो है वो बेसिकली फ़ायदा पहुंच सकता है, ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, just a second. Okay, now when I talk about the next slide, so you can see it over here कि यहाँ के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है. लेट फर्स्ट मी रीड अबाउट दैट व्हाट इज इट एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. Direct quoted speech involves quoting the exact words uttered by the person. Direct का मतलब ये है कि एक इंसान ने जो डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट किसी इंसान को बोली हो या फिर उसके जो डायरेक्ट वर्ड्स हों, तो ये चीज़ आपकी जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है. विद इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, या तो वो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है या फिर वो स्टेटमेंट जो होती है वो आपका कोटेशन मार्क्स में होती है, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास ओपन या फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज का फ़र्क नज़र आता है. जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो डायरेक्ट स्पीच में आपके जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो बेसिकली ओपन होते हैं, राइट. लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपके जो इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे वो नहीं होते, ठीक है. तो ये एक मेजर डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में. अब यहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन ओवर हियर. एनी सेड आई विल बी कमिंग होम टुनाइट. एनी ने ये चीज़ बोली कि आज रात को जो है वो घर वापस आएगी, सही है. तो ये चीज़ क्या हो गई? ये चीज़ बेसिकली आपकी क्या हुई? ये आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि एनी ने जिस इंसान को ये चीज़ बोली थी तो वो डायरेक्ट पर्सन था, उसने डायरेक्ट उससे कांटेक्ट किया और उसने ये स्टेटमेंट डिलीवर की, सही है. अच्छा, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, और जब मैं बात करती हूँ डायरेक्ट की तो डायरेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, ठीक है. दोनों में ये फ़र्क होता है. अच्छा,
Indirect speech, on the other hand, does not have to be within quotes or reported word to word. यानी कि indirect में क्या चीज़ होती है, indirect में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि आप जो भी स्टेटमेंट को डिलीवर कर रहे हो उसको आप जो है एज इट इज़ वैसे ही डिलीवर करें, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली चेंज होती है, सही है, और आप जो भी स्टेटमेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो आप अपने हिसाब से डिलीवर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैंने किसी से कोई बात की है, ठीक है, तो मैंने जिससे जो भी बात की होगी तो जो जो इस तरह से जो भी बात होगी तो मैं आगे जाकर उस बात को उसी तरीके से डिलीवर करूंगी। ये चीज़ जो है ये चीज़ आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो आई एम कॉलिंग माई सिस्टर एंड आई एम सेइंग इट टू हर कि भाई आई हैव टू गो समवेयर, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि आप अम्मी को इन्फॉर्म कर देना, सही है। अब वो क्या करेगी, वो ये चीज़ बोलेगी कि सानिया की मेरे पास कॉल आई थी और सानिया ने ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सानिया कहीं जा रही है और वो लेट हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मेरी जो स्टेटमेंट थी, राइट, तो मेरी स्टेटमेंट यहाँ के ऊपर जो है वो बेसिकली सेम रही, यानी कि आगे जिस इंसान ने डिलीवर किया वो स्टेटमेंट सेम थी लेकिन सिचुएशन डिफरेंट थी। क्यों? मैंने किसी को अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र की, अपना स्टेटमेंट ट्रांसफ़र किया और उसने उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। द रीज़न वाई एम आई कीपिंग दिस लेक्चर मिक्स एंड मैशअप, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, क्योंकि पेपर्स के लिए जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपका रोल प्ले करता है, राइट। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है, शी सेड दैट शी वुड बी कमिंग होम दैट नाइट। इसमें भी अगर आप स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो आपको जो है वो इस स्टेटमेंट पे भी ये चीज़ दिख जाएगी कि वो डायरेक्ट आपको एक स्टेटमेंट नहीं बोल रही है, वो आपको एक स्टेटमेंट इनडायरेक्टली जो है वो डिलीवर कर रही है, सही है। अच्छा, नाउ moving towards the next part, okay. Now, when I talk about indirect speech or exclamatory sentences, sentences which expresses state of joy or sorrow or wonder is called exclamatory sentences. For example, hurrah, we won the match. Alas, I failed the test. Whoa, what a nice shirt it is. अब यहाँ के ऊपर आपने ये चीज़ देखी होगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप अपनी हैप्पीनेस को या फिर अपना सॉरो मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हैं। जब आप उदास होते हैं तो आप उस चीज़ को भी जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। या फिर जब आप उदास नहीं होते हैं तो आप अपनी एक्साइटमेंट से भी उस चीज़ को जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी आ जाती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, यानी कि आप अपने एक्सप्रेशन से अपने जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है आप उस चीज़ का इजहार करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। हुर्रा, हुर्रा हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, राइट, या फिर जब जो चीज़ हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती है, ठीक है। तो उसमें हम अपने बॉडी जेस्चर से या फिर अपना जो हमारे वर्ड्स होते हैं उससे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। अल्लाह, आई फेल द टेस्ट। अब लास्ट जो यहाँ के ऊपर यूज़ किया गया है वो इस सेंस में यूज़ किया गया है दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस थिंग, कि आपने तैयारी की थी लेकिन स्टिल यू हैवंट स्कोर्ड अप टू द मार्क, ठीक है। तो अलाज जो हम यूज़ करते हैंगे, अलाज हम इस सेंस में यहाँ के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है आपकी थर्ड स्टेटमेंट। आपकी थर्ड स्टेटमेंट आपको ये चीज़ बोलती है, वो व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे रहे हो या फिर आप उस चीज़ से ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपको वो शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब आपने देखा होगा कि जब मैं बात करी एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन का मतलब है कोई एक्शन करना, राइट। व्हेन यू आर सेइंग हुर्रा, ऑटोमेटिकली यू आर एक्साइटेड, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आप अपने एक्शन से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। सिमिलरली जब अल्लाह कहा जा रहा है आप उस चीज़ से अपने बॉडी लैंग्वेज से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वो, तो आप वही चीज़ अपने बॉडी लैंग्वेज से जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो तीनों सिचुएशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है।
तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आपके पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं जिसको आपने चेंज करना होता है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, नाउ मूविंग forward towards the next one. All right. To change such sentences, the words explained with joy. अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अगर such sentences को change करना हो, let's suppose कि यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है exclaimed with joy or exclaimed with sorrow or exclaimed with wonder is added in the reporting verb depending upon the nature or explanatory sentences in indirect speech. Now, when you're talking about direct speech, because obviously that was a direct step, सही है, यहाँ के पर डायरेक्टली जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। अब वो यहाँ पर आपका ये जो कंटेंट है, इन दिस कंटेंट दे आर एक्सप्लेनिंग कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, वर्ब मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करना, हुर्रा यहाँ पर आपका वर्ब है, लॉस इज ऑल्सो अनदर वर्ब एंड वो इज ऑल्सो अनदर वर्ब, राइट। तो जब भी आप इस तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो आपने डायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। डायरेक्ट स्पीच के आपके ये जो सेंटेंसेस हैं उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अच्छा, नाउ the first thing is, let's go and let's move towards the first sentence. The first sentence says that he said, "Hurrah, I won a prize." He said यानी कि उसने कहा, hurrah जहाँ के ऊपर उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया, and then it is said that he won the prize, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था तो उससे पहले आप यहाँ के ऊपर दो चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। एक तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सबसे पहले ही सेड जब आपने लिखा उसके बाद आपने कॉमा लगाया, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है, ठीक है। अच्छा, अब कॉमे के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर आपके इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुए। इन्वर्टेड कॉमास ओपन होने के बाद हुआ क्योंकि एक एक्सप्रेशन था, सही है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाया एंड देन यू कंटिन्यूड योर सेंटेंस। आई यहाँ पर हमने इसलिए कैपिटल लिखा क्योंकि जब भी मिडल ऑफ द सेंटेंस आई आएगा तो फिर वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। आई वॉन अ प्राइज हुआ एंड देन आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट अ सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। नाउ when we are talking about indirect speech, as you can see over here, he exclaimed with joy that he had won a prize. He exclaimed with joy यानी कि यहाँ के ऊपर हुर्रा को उसने रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, उसने एक्सप्रेशन बता दिया कि वो अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करके ये चीज़ बता रहा है दैट ही वॉन अ प्राइज, कि उसने जो है वो एक प्राइज जीत लिया है। अब दोनों के बीच में जो वाज़ेह डिफरेंस है आप यहाँ के ऊपर देख सकते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्पीच, सो यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पर हमने कॉमा लगाया था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी थे, यहाँ के ऊपर एक्सप्लेनेशन मार्क भी था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच तो इससे सारी चीज़ें हट गई हैं, सिर्फ एंड में जो है वो आपका एक फुल स्टॉप आ गया है, ठीक है। ये डिफरेंस आता है आपका डायरेक्ट स्पीच के बीच में एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, she said, बीच में फिर आपका कॉमा आया, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, alas, देन आपका एक्सप्लेनेशन मार्क, आई फेल्ड इन एग्जाम एंड देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सेम यही प्रोसीजर था, सिर्फ हमने क्या किया, हमने सेंटेंस चेंज कर दिया और इस सेंटेंस में जो बेसिकली इसकी लैंग्वेज थी हमने उस चीज़ को जो है वो चेंज कर दिया, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इनडायरेक्ट स्पीच, She exclaimed with sorrow. Alas को हमने रिप्लेस किया है sorrow से, उस एक्सप्रेशन को हमने मजीद और मॉडिफाई कर दिया है that she failed in the exam. फुल स्टॉप के वो जो है वो एग्जाम में फेल हो गई है, सही है। दोनों सेंटेंसेस सेम थे, दोनों की मीनिंग सेम थी, सिर्फ और सिर्फ हमने उसके प्रोसीजर को चेंज कर दिया कि इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर एग्जैक्टली जो है वो ये किस तरीके से होगा। अच्छा, now moving towards the next one, John said,
and then comma, inverted commas open, whoa, exclamation mark, what a nice shirt it is, कि ये कितनी अच्छी शर्ट है, ठीक है। वो अपने यहाँ के ऊपर इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, राइट। अच्छा, अब यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट अ सेकेंड, ओके। जॉन एक्सक्लेम्ड विद वंडर, जॉन ने उस चीज़ को वंडर यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी से एक्सप्लेन किया दैट इट वाज अ नाइस शर्ट, उसको जो है वो ये शर्ट अच्छी लगी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ के ऊपर भी अच्छा फुल स्टॉप एंड में आएगा, सही है। यू कैन सी द डिफरेंस वेरी क्लियरली कि डायरेक्ट स्पीच में हमने उसको किस तरीके से लिखा था और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने फिर उसको किस तरीके से लिखा है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। All right. When I talk about indirect speech of imperative sentences कौन से होते हैं, अब हम इसको जरा थोड़ा सा go through करते हैं। Number 1, a sentence which expresses command, request, advice or suggestion is called imperative sentences. जो भी आपके sentences command को express कर रहे हों, सही है, या फिर वो sentences आपके express कर रहे हों किसी request को, या फिर किसी एडवाइस को, या फिर किसी सजेशन को, तो वो वाले आपके जो सेंटेंसेस आएंगे वो सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, राइट। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी कि दरवाज़ा खोलिए। अब यहाँ के ऊपर क्या चीज़ है, यहाँ के ऊपर ये जो आपका सेंटेंस है ओपन द डोर, ये आपका कमांडिंग सेंटेंस है, सही है। अगर ओपन से पहले मैं प्लीज लिखती तो वो चीज आपका रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होता। नंबर 2 पर आइए, प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ के ऊपर क्या चीज है, ये जो आपका सेंटेंस कहलाएगा ये आपका रिक्वेस्टिंग सेंटेंस हैगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द थर्ड वन, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन आप कह सकते हैं कि ये जो है कमांडिंग सेंटेंस भी है, एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट कि लर्न द लेसन जो आपका सेंटेंस हैगा, तो ये आपका सेंटेंस आ जाता है एडवाइसिंग सेंटेंस भी, बिकॉज यू आर एडवाइसिंग समवन कि द पर्सन शुड लर्न द लेसन, क्योंकि अगर वो लेसन को याद करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लेसन उसी को बेनिफिट करेगा, सही है। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। To change such sentences into indirect speech, the word ordered or request or advice or suggested or forbade or not to do is added to reporting verb, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर ये चीज़ बोल रहे हैं कि जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना होता है तो उस सेंटेंस के चेंज होने में द वर्ड ऑर्डर्ड, लेट्स सपोज कि आपका एक वर्ड है ऑर्डर्ड, सही है, यानी कि किसी को हुक्म देना, रिक्वेस्ट किसी से प्लीज करना, एडवाइस किसी को एडवाइस करना कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, और सजेस्ट भी यानी कि आप सजेशन एडवाइस समहाउ इट्स द सेम, ठीक है। और फॉरबिड यानी कि किसी को एक्सप्लेन करना कि फर्दर चीज़ों को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और नॉट टू डू या फिर किसी को वार्न करना, नॉट टू डू इज नोन एज द वार्निंग, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस एडेड टू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, आपका डायरेक्ट स्पीच में इन तमाम वर्ड्स को ऐड किया जाता है। रिपोर्टिंग मतलब डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ठीक है। अच्छा, डिपेंड अपॉन द नेचर में क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें ये चीज़ आ जाएगी कि आपको किस तरीके का जो है यूँ समझें कि सेंटेंस चाहिए, सजेस्ट में मेरी सजेशन ही होगी, वहां पर ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो ये टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस जो है वो किस तरीके का चाहिए, या फिर आप उसको फर्दर किस तरीके से करेंगे। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, verb depending upon nature of imperative sentence in reported speech. For example, now moving towards the first example, which you can see over here, that is, he said to me, please help me. अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई, मैंने यहाँ के ऊपर comma लगाया, then inverted comma is open, and then please help me inverted comma is closed, and then full stop, right?
अब जब मुझे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी? ही रिक्वेस्टेड। अब यहाँ के ऊपर मैंने प्लीज़ नहीं लिखा। प्लीज़ से मुझे ऑलरेडी ये चीज़ समझ आ गई कि एक इंसान इंसिस्ट कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो मैंने प्लीज़ को रिप्लेस कर दिया रिक्वेस्ट से, राइट? ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। जब आप इनडायरेक्ट किसी तीसरे इंसान को बता रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी स्टेटमेंट पास्ट टेंस में चली गई है, इसीलिए अब यहाँ के ऊपर ईडी फॉर्म आ जाएगी एंड देन आपका एक्शन वर्ब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसकी मदद करूं एंड देन फुल स्टॉप, राइट? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू हिम, comma, inverted commas open, you should work hard for exam. उसने ये चीज़ बोली that I should work hard for exam. He suggested him to work hard for exam. अब देखो you should work hard for exam, automatically इस सेंटेंस को पढ़ के ये चीज़ पता चल रही है कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो। अगर आप यहाँ के ऊपर एडवाइस भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है। अगर आप यहाँ के ऊपर सजेस्टेड की जगह एडवाइस लिखते तो भी सही होता और सजेस्टेड भी यहाँ के ऊपर सही है, ठीक है? ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। उसने सजेस्ट किया कि दे शुड ही शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, फॉर द बोर्ड एग्जाम। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच सेज दैट they said to him, comma, inverted commas open, do not tell a lie. उसने उनसे कहा कि झूठ नहीं बोलो। डायरेक्ट स्पीच थी, डायरेक्टली बोला था। अब जब इसी स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन गया? दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई। अब क्या चीज़ हुई? हमने सेंटेंस की, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस था उसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो फॉर्मेशन हैगी तो वो फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जो लास्ट का सेंटेंस होता है उसकी। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट की फॉर्मेशन है ना, तो सब्जेक्ट की फॉर्मेशन हमेशा डायरेक्ट स्पीच में सेम रहती है, सही है? दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई, फुल स्टॉप। ओके, coming towards the next one, he said, comma, inverted commas open the door, then full stop and inverted commas close. उसने बोला open the door, it means it's an ordering statement कि आप किसी को order दे रहे हैं, ठीक है? इसीलिए जब हमने उसको indirect में shift किया तो फिर हमने इसको लिखा he ordered to open the door. उसने order किया that we should open the door, ठीक है? Full stop. All right. Now moving towards the next one. The teacher said to student, comma, inverted commas open, do not waste time, inverted commas close, and then full stop. Teacher ने student से बोला do not waste time, कि टाइम वक्त को ज़ाया ना करो, and then inverted commas close, and then you can see a full stop over here, ठीक है? अब आ जाए इसी के next sentence के ऊपर। The teacher, which is the indirect sentence, the teacher advised the students not to waste time. टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है? ये चीज़ क्या हो गई? ये चीज़ आपकी हो गई कि आपने यहाँ के ऊपर क्योंकि एडवाइस थी, टीचर ने एक एडवाइस दी है, इसी वजह से ये जो आपका सेंटेंस था ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है? ऑल राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, indirect speech for interrogative question sentences. Indirect speech interrogative question sentences के लिए क्या होगी? For changing interrogative questions, interrogative यानी कि directly पूछना, sentences into indirect speech, जब आपको questions को indirect speech में convert करना होता है, we have to observe the nature of questions. इस कॉन्टेक्स्ट में हमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना होता है कि क्वेश्चन का बेसिकली नेचर जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, एंड देन चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और फिर ये होता है कि उसके बाद हम उसको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं, ठीक है?
इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू इट रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, फिर उसके जो रूल्स होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अ क्वेश्चन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दो तरीके का हो सकता है। नंबर वन टाइप विच कैन बी आंसर्ड इन ओनली येस और नो, एंड पहली जो टाइप होती है इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की वो ये होती है कि येस और नो, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। अदर टाइप विच नीड्स अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स आंसर एंड कैन नॉट बी आंसर्ड, और उसमें जिसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जिसको आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आंसर करते हो, ठीक है, इन ओनली येस और नो, येस और नो में, तो ये आपका जो है वो दूसरे तरीके की क्वेश्चन टाइप होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल direct speech. They said to me, inverted comma, sorry, comma, then inverted commas open. Did you go to school? Question mark, inverted commas close. अब आपने इस सेंटेंस में देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ के पर एक सवाल पूछ रही थी, इसी रीजन की वजह से मैंने एंड में क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने से पहले, राइट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास की सेंटेंस की बात करते हैं, तो हमेशा इस तरह के सेंटेंस के अंदर ही बेसिकली आपकी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उसको फिट इन करते हो। लेट्स सपोज व्हेन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के पर आप अपनी स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं। दे सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल गई। इनडायरेक्ट स्पीच, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्कूल गई। अब यहाँ के ऊपर देखो कि डिड यू गो टू स्कूल, here you're asking the direct question, and then indirectly जब आपको उसका रिस्पॉन्ड करना था उस क्वेश्चन को, दे आस्क्ड मी, उन्होंने फिर मुझसे पूछा इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, कि क्या मैं स्कूल गई थी या मैं स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हाउ डू वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो इस उसमें करवा दी हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस वन, ऑल राइट, how to use reported speech. When I talk about reported speech, तो आप reported speech को basically किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Now, yes, when we use reported speech, we are usually talking about the past. जब भी हम reported speech को इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि हम past की बात कर रहे होते हैं, यानी कि past की उन चीज़ों की बातें जो कि गुजर चुकी हैं, सही है। Therefore, verbs usually change to the past tense. इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि आप verbs को usually change कर रहे हो past tense में in reported speech में। For example, किस तरीके से, let's move forward and see that. जब भी आपका am और is आपका helping verb है जिसको हम present tense में use करते हैं, right? am और is यानी कि आपकी जो direct speech होती है वो आपका हो गया present tense, right? Indirect speech हो गया आपका past tense. अब जब हमने बात की डायरेक्ट स्पीच की, दैट इज द प्रेजेंट टेंस, तो ये जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर बन जाएगा was. am I या फिर is I वो रिप्लेस होकर was जाएगा, ठीक है, was या फिर were, सही है। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में। सिमिलरली सॉरी, ये हो जाएगा am and is was हो जाएगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट are, तो are फिर आपका जो है वो चेंज होकर हो जाएगा were, सही है। Because when we are talking about our indirect speech, then automatically when we will switch our, that is the direct speech, into indirect speech, then automatically it will become were. Now coming towards the next one, have and has. Have and has will be written into direct speech when the sentence will be in direct speech. Have and has. Remember one thing, when we are talking about a sentence, then it doesn't mean that we are utilizing both of the helping verbs in one sentence. It happens in minimal cases. It means that in some cases we are using both helping verbs in one sentence. But moreover, when we talking about has and have,
then in a sentence we for example अगर sentence एक ही है, so we either we'll use have or has, it depends on the sentence, and then we will fill up the required gaps. Okay, now has and have will be used in direct speech, but automatically when we will shift towards indirect speech, then it will become had, right? Now coming towards the next one, can and can't, right? It is used in direct speech, and then after when we have to convert it, तो automatically can and can't आपका बन जाएगा indirect speech में. That would be the past statement. Can would be could. Wherever you will be using can, it will become could, and can't will become couldn't, right? Now, coming towards the last one, will and won't will be used in direct speech, but when we have to shift it towards indirect speech, then will become would, and won't will become wouldn't into indirect speech. All right. Now, when I talk about present simple tense and past tense, so you can see it over here as I have mentioned how when I'm talking about present simple tense, all right, then in present simple tense, you're having the second one, present continuous tense, then present perfect tense, then present perfect continuous tense. So all of these things lie under present simple tense. When I talk about past simple, see, we are having three basic tenses, that is present, past, and future. But present, past, and future are subdivided into four categories. Present simple tense, if you will remember this order, then automatically this thing will really help you into your papers, and you will never get confused while you're having the questions of direct speech or indirect speech. All right. Present simple tense. Present simple tense will always change into past simple. Present continuous tense will always change into past continuous. Continuous means the ing form, so present continuous will change into past continuous, right? And then present perfect tense will change into past perfect tense. Present perfect continuous tense will change into past perfect continuous tense. This is exactly the way that how does this cycle works. All right. Now, when I talk about past simple will always change into past perfect. Past continuous will always change into past perfect continuous. Future simple or will change into would. Future simple means कि sentence आपका future simple में होगा, ठीक है, उसको फिर आप past simple में ही सॉरी future ठीक है, फ्यूचर सिंपल आपका सेंटेंस पास्ट में ही होगा, बस सिर्फ उसमें ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो फिर रिप्लेस हो जाएगा वुड से, ठीक है. फ्यूचर कंटिन्यूअस will be changed into indirect speech with would be. That is the helping verb which you're using over here. All right. Now moving forward. Changes in the time and adverbs in indirect speech. टाइम आपका कैसे चेंज हो रहा है और उसके साथ आपके जो एडवर्ब्स हैंगे वो कैसे चेंज हो रहे हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ वी आर अबाउट टू स्टडी अबाउट दिस थिंग. ऑलराइट. Changes to, when I'm talking about today, then today will be changed into that day or the same day. Remember one thing, it depends on the sentence that what exactly you're putting it to be changed. For example, if today is used in direct speech, then when I'm talking about indirect speech, either you can use that day or either you can use the same day. It depends on the sentence. Similarly, when I'm using tomorrow in direct speech, right, then when I'll be changing that sentence in which tomorrow is used into indirect speech, then either I will use the next day or either I'll use the following day. Both are having the same meaning. When I'm talking about yesterday, it is used in direct speech. But when I'll be converting it into indirect speech, then either I'll use the day before or either I'll use the previous day. The meaning is same, but the sentence is different. All right. Next week, month, and year. When I talk about next week, then in indirect speech, I'll say the following week. When I talk about month, then I'll say next month, then I'll say the following month. When I'll say next year, then I'll say the following year. All right. तो इस तरीके से you're changing the sentence. Now,
Moving towards the next one, now slash just. Now and just will be changed in indirect speech with then. When I'm talking about ago, ago will be changed in indirect speech with before. When I'm talking about here, here will be changed in indirect speech with there. When I'm talking about this, this will be changed in indirect speech with that. All right. Now, so this is exactly the exercise. I have already explained to you the difference between direct and indirect speech in detail. I have even told you that when we are talking about direct speech, then what sentence will be in direct speech and how the sentence will be converted into indirect speech. So the explanation is in front of you, which you can see. All right. Now there is an exercise. Change this direct speech into reported speech. आपने क्या करना है? आपने इस direct speech को जो है वो change करना है, ठीक है? You're having a sentence over here. He worked in a bank, she said. अब आपने ये जो है change this direct speech into reported speech. Sorry, यहाँ के पर थोड़ा सा जो है वो ठीक है, सवाल बिल्कुल सही पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी फॉर्मेशन को हमने आगे पीछे कर दिया है. सही है. What you have to do is first आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच बनाना है, तो आपने इसकी फॉर्मेशन चेंज करनी है. इसकी फॉर्मेशन को चेंज होने के बाद फिर आपने सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करके लिखना है, ठीक है. He worked in a bank, she said. Number 2, we went out last night, she told me. Number 3, I am coming, she said. Number 4, I was waiting for the bus when he arrived, she told me. And number 5, I'd never been there before, she said. Now what you have to do, all of these are the exercises which I have given in this presentation. आपने इन exercises को solve करना है, ठीक है. And then after completing this exercises, you have to mention me in the comment section. And if you're connected somewhere else with me, so definitely you can share your answers there also. And if still you're having confusion in understanding direct and indirect speech, then definitely I'll help you out in that matter too. All right. There is another exercise for you. You have to complete this part as well. And then you have to complete this part as well. Okay. And when all of these things will be completed, तो आपके फिर जो भी चीजें होंगी आप फिर मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. Remember one thing. Before ending up this lecture, I just want to summarize by saying that, see, whenever we are talking about direct speech means it's the direct interaction, it's the direct thing which you're doing with someone. But whenever we are talking about indirect speech, then it means that you are not having the direct interaction with someone. That is the indirect interaction which you're having with someone. So that is the indirect speech. All right. And still, if you're having any confusion, so definitely you can ask me. So moving forward, just a second. All right. So this is another exercise which you have to do. I think that these are only 20 questions which I have given over you here. And yes, मैंने जितने भी आपको चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेट्स सपोज कि मैंने जो शुरू में आपको एग्जांपल्स देकर या फिर जो मैंने आपको बताया था, अगर आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, या फिर इससे पहले जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, इफ़ यू कीप ऑन रिमेंबरिंग दोज डिफरेंसेस, देन डेफिनेटली इट विल बी ईजियर फॉर यू to understand direct and indirect speech. All right. So thank you so much everyone for listening to us, and I hope that this presentation turned out to be very useful for all of you, and I hope that all of those misconceptions which were there in your minds, so definitely all of those misconceptions are cleared. Still, if you're having any questions, so you can ask me wherever we are connected. We'll return back with another presentation for all of you. Till then, take care. Barakallah everyone, and Allah Hafiz.